गुड बाय मिस्टर चिप्स, जिसके राइटर जेम्स हिल्टन है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। शुरू में इसको इन लिस्ट मैंने किया है, ये आप देख लें। चैप्टर नंबर 1 में टोटल 10 क्वेश्चंस शामिल हैं। चैप्टर नंबर 2 में टोटल 6 क्वेश्चन शामिल हैं। चैप्टर नंबर 3 में टोटल 8 क्वेश्चंस शामिल हैं। चैप्टर नंबर 4 में टोटल 8 क्वेश्चंस शामिल हैं। चैप्टर नंबर 5 में टोटल 5 क्वेश्चन शामिल हैं। चैप्टर नंबर 6 में टोटल 10 क्वेश्चन शामिल हैं। चैप्टर नंबर 7 में टोटल 4 क्वेश्चन शामिल हैं। चैप्टर नंबर 8 में भी टोटल 4 क्वेश्चन शामिल हैं। चैप्टर नंबर 9 में टोटल 8 क्वेश्चन शामिल हैं। चैप्टर नंबर 10 में टोटल 7 क्वेश्चन शामिल हैं। चैप्टर नंबर 11 में टोटल 8 क्वेश्चन शामिल हैं। चैप्टर नंबर 12, 13, 14 और 15 में टोटल 4 क्वेश्चन शामिल हैं। और चैप्टर नंबर 16 में 5 क्वेश्चन शामिल हैं। चैप्टर नंबर 17 में 4 क्वेश्चन शामिल हैं। और चैप्टर नंबर 18 में टोटल 5 क्वेश्चन शामिल हैं। फॉर 12th FSC, FA, ICSE, ICS में गुड बाय मिस्टर चिप्स, जो कि जेम्स हिल्टन का लिखा हुआ है, इसके नोट्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है वो है चिप्स लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन वाज मिस्टर चिप्स बॉर्न। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड मिस्टर चिप्स measure his time at Mrs. Wickett's house. Question number 3, what is meant by anno domini? 4, what is a weak point of Mr. Chips, a teacher? 5, how was the day when Mr. Chips came to Brookfield for interview? 6 में है what type of head was Weatherby? Describe Mr. Chips's first meeting with him. और question number 7, what did Mr. Weatherby advise to Mr. Chips? और 8 है how did Mr. Chips face his first class at Brookfield? In addition, how did he punish his first student? 9 है what did he used to say to Cole? और 10 है why did Mr. Chips laugh and cry at same time? चैप्टर नंबर 2 की तरफ आएँ। ये आंसर मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि आंसर आपने ख़ुद पढ़ लेना है, फिर इस तरह वीडियो लंबी बन जाएगी, आप देख लें। मैं जस्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर नंबर 2 का, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रुकफील्ड, हु रिबिल्ट एंड एक्सटेंडेड इट। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट काइंड ऑफ स्कूल वाज ब्रुकफील्ड। 3 है ट्रेस आउट सिमिलैरिटीज़ बिटवीन मिस्टर चिप्स एंड ब्रुकफील्ड। 4 है व्हाट वाज मिस्टर चिप्स ड्रीम एज अ टीचर। 5 है डिस्क्राइब हिज ग्रेजुअल डेवलपमेंट एज अ टीचर इन ब्रुकफील्ड। और 6 है व्हाट वाज गिवन टू हिम एट हिज रिटायरमेंट। तो ये देख लें। फिर हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 की तरफ आते हैं, जो कि एट मिसेस विकेट्स हाउस, यानी मिसेस विकेट्स के घर के बारे में है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डिड मिस्टर चिप्स सर्व अ बॉय हु विजिटेड हिम। 2 है हाउ वाज मिस्टर चिप्स रूम डेकोरेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट्स जॉब एट ब्रुकफील्ड। और 4 है हु वाज मेजर कॉलिंगवुड, व्हाई डिड मिस्टर चिप्स पनिश हिम। और 5 है व्हाट वर द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट। 6 है व्हाट वाज द आइडिया ऑफ मिस्टर चिप्स अबाउट लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेजेस। 7 है हाउ डिड ही स्पेंड हिज टाइम एट मिसेस विकेट्स हाउस। और 8 है अ टिपिकल बैचलर वाज इट ट्रू अबाउट मिस्टर चिप्स। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। स्प्रिंग कुड रिमेंबर ऑफ हिज वाइफ 1896 मीटिंग विद कैथरीन ब्रिजेस। इसका क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन एंड वेयर डिड चिप्स गो ड्यूरिंग समर वेकेशंस ऑफ 1896। और 2 है हाउ डिड चिप्स कम अक्रॉस कैथरीन ब्रिजेस। 3 है व्हाट वर द व्यूज़ ऑफ मिस्टर चिप्स अबाउट वुमेन। यूँ भी सवाल बन सकता है। या क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखते हैं हाउ डिड चिप्स फील इन द कंपनी ऑफ वुमेन, यूँ भी बन सकता है। और 5 देखें व्हाट वाज चिप्स आइडिया अबाउट मॉडर्निज्म। यानी 3 तरह के सवाल इसके बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें डिस्क्राइब फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कैथरीन ब्रिजेस। 7 है व्हाट वर पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ कैथरीन ब्रिजेस। 8 है व्हेन एंड वेयर डिड दे गेट मैरिड। चैप्टर नंबर 5 देखें अ डे बिफोर मैरिज, what did Chips remember about the time he spent with Catherine at लेक डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 है।
और 2 है व्हाट वर द आइडियाज़ ऑफ कैथराइन अबाउट मिस्टर चिप्स प्रोफेशन। 3 है हाउ डिड चिप्स डिप्रिशिएट और क्रिटिसाइज हिमसेल्फ, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ कैथराइन। 4 है फ्रॉम वेयर वाज कैथराइन मैरिड। 5 है व्हाट डिड कैथराइन ब्रिजेस से टू मिस्टर चिप्स ऑन नाइट बिफोर देयर वेडिंग। चैप्टर नंबर 6 की तरफ आते हैं। आ फुटबॉल मैच, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज द परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टर चिप्स एज अ टीचर बिफोर हिज मैरिज। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट चेंजेस डिड कैथराइन ब्रिजेस बीइंग इन मिस्टर चिप्स। यूँ भी सवाल बन सकता है या यूँ भी बन सकता है व्हाट सॉर्ट ऑफ ह्यूमर डिड मिस्टर चिप्स हैव, हाउ डिड कैथराइन इम्प्रूव इट। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। व्हेन एंड हाउ डिड द बॉयज़ एट स्कूल बिगेन टू लव मिस्टर चिप्स। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वाज द आइडिया ऑफ मिस्टर चिप्स अबाउट इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ स्कूल व्हेन कैथराइन ब्रिजेस प्रपोज्ड फॉर अ स्कोर मैच, सॉक्सन मैच। 7 हाउ डिड शी परसूड मिस्टर चिप्स फॉर द मैच। और 8 है हाउ डिड द गेम गो, व्हाट इंप्रेशंस डिड द बॉयज़ टेक विद हिम। 9 है हु केम टू सी मिस्टर चिप्स ड्यूरिंग द वार। और 10 है हाउ डिड कैथराइन हेल्प मिस्टर चिप्स इन द मैटर्स ऑफ स्कूल। चैप्टर नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट मेमोरीज ऑफ कैथराइन हॉन्टेड चिप्स। और 2 है हाउ डिड शी अर्ज मिस्टर चिप्स टू फॉरगिव द बॉयज़, डिड शी ऑलवेज प्लीड फॉर लेनियंसी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड चिप्स रिमेंबर अबाउट डस्टर। और 4 है व्हाट डिड चिप्स स्टार्ट राइटिंग हिज मेमोरीज, व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड शी फेस। चैप्टर नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डिड Faulkner asked Mr. Chips on April 1st, 1898. और इसका 2 है Why did Chips not want to receive condolence? Question number 3 है What was the April flurry Chips face? How did it affect him? 4 है When did Catherine die? चैप्टर नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इफेक्ट ऑफ कैथराइन्स डेथ इसका टाइटल है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डिड होम हाउस मास्टरशिप प्रूव यूजफुल आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ। और इसका 2 है व्हाट चेंजेस डिड द डेथ ऑफ कैथराइन ब्रिजेस ब्रिंग इन टू मिस्टर चिप्स। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड मिस्टर चिप्स रिमेंबर अबाउट नेलर। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू नो अबाउट हॉल्सबरी। और 5 है व्हाट चेंजेस डिड अकर इन चिप्स इन स्टार्ट ऑफ न्यू सेंचुरी। 6 है व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री थ्रू आउट द स्कूल। और क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट वाज द आइडिया ऑफ मिस्टर चिप्स अबाउट बोर्स। और 8 है व्हाई डिड लॉयड जॉर्ज एंजॉय टॉकिंग टू मिस्टर चिप्स। चैप्टर नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ राल्स्टन, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन डिड चिप्स बिकम द एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। और 2 है हु वाज राल्स्टन। 3 है हु वाज मिस्टर जॉन्स, व्हाट वाज हिज ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज द आइडिया ऑफ मिस्टर चिप्स अबाउट इंग्लैंड। और 5 है व्हाट डिड चिप्स रिमेंबर अबाउट द डायमंड जुबली। 6 है व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट एडवर्डियन रूल। और 7 है हु वाज ग्रेसन, व्हाट न्यूज़ वाज स्प्रेड इन स्कूल अबाउट हिज फादर, whom did चिप्स कंडोल विद। चैप्टर नंबर 11 कर्ल विद राल्स्टन, इसका क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन वाज राल्स्टन। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट वाज राल्स्टन्स फाइनल वार्निंग टू मिस्टर चिप्स। और 3 व्हाट एलिगेशन डिड राल्स्टन पुट ऑन मिस्टर चिप्स, व्हाट डिड ही चार्ज विद हिज प्रोनाउंसिएशन। Question number 4 what was the idea of Mr. Chips about Ralston's headship. Or 5 how did people come to know about quarrel between Chips and Ralston. Or 6 what was the reaction of schoolmasters. 7 who was the chairman of governors, how did he handle the situation. Or 8 what did Chips think about Ralston years after their quarrel. चैप्टर नंबर 12 फेयरवेल स्पीच आर के 12 ये इसका टाइटल है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हु वाज सक्सेसर ऑफ राल्स्टन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज ही। 2 है व्हाई वाज 1913 स्पेशल फॉर मिस्टर चिप्स। 3 है व्हाट डिड ही से इन फेयरवेल स्पीच। और 4 है व्हाट वर द एक्टिविटीज़ ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट। चैप्टर नंबर 13 रिक्वेस्ट ऑफ चैट्रिस एंड रिजॉइनिंग ऑफ मिस्टर चिप्स, इसका क्वेश्चन नंबर 1 what happened to Brookfield during the war years. Or 2 what did Chatteris read out on every Sunday night during the war. 3 what did Chatteris tell Mr. Chips about the problems of school. 4 what request did he make to Chips, did Mr. Chips accept the offer. Chapter number 14 World War and Death of Chatteris,
What did Chips feel when he rejoined Brookfield? What did he teach there? Or 2. Why did not Chips want to be official head of Brookfield? 3. Who was Max Stifle? What did Chips feel when he announced his name? 4. What was the story that got famous about bayonet practice? चैप्टर नंबर 15 की तरफ चलते हैं. एंड ऑफ वॉर ऑफ एंड रिजिग्नेशन ऑफ चिप्स. इसका चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डिड चिप्स टीच ड्यूरिंग लाउड रॉर ऑफ बम्बिंग. इसका क्वेश्चन नंबर 2. होम डिड मिस्टर चिप्स कॉल्ड अ स्टिंक मर्चेंट. 3. व्हाट हैपेंड ऑन नवंबर 11th 1918. और 4. हाउ डिड चिप्स कीप अप द स्पिरिट ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द वॉर. चैप्टर नंबर 16. चिप्स विल. Why did not Chips go abroad after his retirement? Or question number 2. What was his idea about England in the post-war decade? Question number 3. How did Chips earn the reputation of a great jester? Or 4. What was Mr. Chips's will? 5. What was the joke about Wurlitzer? वर्लिट्जर. चैप्टर नंबर 17 है लास्ट विजिटर ऑफ मिस्टर चिप्स लाइनफोर्ड. और इसका क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डिड मैरीवेल से टू चिप्स ऑन अ फॉगी मॉर्निंग इन 1933. 2 है व्हाट वर द थिंग्स चिप्स हैड नेवर डन इन हिज लाइफ. और 3. हु वाज द लास्ट विजिटर ऑफ मिस्टर चिप्स. व्हाट डिड दे टॉक अबाउट. इसका 4 है व्हाई डिड चिप्स स्टार्ट क्राइंग व्हेन द बॉय लेफ्ट. चैप्टर नंबर 18. डेथ ऑफ मिस्टर चिप्स. Whom did Mr. Chips see around him when he woke up? 2. What did Chips say about his children before his death? Or 3. When did Mr. Chips die? 4. What did Cartwright say in his speech about Mr. Chips? Or 5. What did Lineford remember about Mr. Chips? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इनको आप अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा. Thanks for watching.